Here Muskan, right? And other girl is Shalini. He has not. Anjali, he has not come. Fine. She has not come, right? All right. No doubt? कोई सवाल नहीं है? नहीं? पक्का? Okay. Okay. What we will do today, I'll introduce you few more terms. Right? For example, the word democracy. Have you heard about this? What does it mean? Democracy? Presented by people. Okay. Yes, Ayushi, go ahead. Ruled by people. Ruled by people. Right? Yes, yes. You all are right. There's a demos. It has two words, root word, demos and krasia. Right? Demos means people and krasia means rule. Right? Say that means rule by the people. Right? Democracy means rule by the people. That is a general meaning. Right? Or you can say that self-rule. Self-rule. Either through self or the represented, chosen representative. Yeah. Now, इसको ऐसे भी कहते हैं a system of government in which, person rule themselves. It is a system of government. Now, democracy is a form of government. What are the another form of government? Monarchy. What is monarchy? Monarchy, yeah? Where king or queen rules. Right. It is a system of government. Monarchy refers to a system of government in which the king or queen or family, one family rules. Right? That is called monarchy. And monarchy is, once upon a time was considered as a good form of government. No. Monarchy was considered as a good form of government. There was so many rajas in everywhere, in history of India also and history of the West also. Right? So when monarchy becomes very much authoritarian, monarch always rules for the welfare of the people. If you look at the king or the queen or the family rules always for the good for the people. If you look at Machiavelli, or if you look at Kautilya, or any Manu, any thinker, you take the Manu, or if you take the Vasishtha in Indian tradition, they had given so many suggestions to the king, isn't it? How to run the state administration. No. If you look at this philosopher, Manu, Machiavelli, Kautilya, Vasishtha, Parasar, so many philosophers, right? और अल-बरूनी, नाम सुना है अल-बरूनी का? medieval time में हुआ था. They are the philosopher. Or for example, Kabir was also philosopher, most renowned philosopher. I love Kabir. Yes, if you look at Kabir was a person, the most secular person in the world. If you look at the first secular person in the world, he equally criticized the orthodoxical practices in Hinduism and also orthodoxical practices in Islam. नहीं, कंकर पत्थर चुन के मस्जिद लियो बनाए, का मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए. सुना है ना रोहिणी, आयुषी, आशुतोष, सुना होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. पत्थर मिले हर मिले तो मैं पूजू पहाड़.
अगर भगवान देव वर्शिप करते ना छोटे छोटे मूर्ति बना के, तो उन्होंने पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़. Right. So if you look at the Kabir was a most secular person. He was a philosopher. Anyway, now if you look at the philosopher Manu, Kautilya, Machiavelli, you know, he had both all had given advice, right? Advice to the prince how to run a government, how to run the state in a well manner. But when king does not follow the advice given by the Kautilya or Machiavelli or any person, or he runs or she runs, monarch runs on his own way, then what we called. Have you heard about the word tyranny? Tyranny. नहीं सुना है? Tyranny is also a system of government in which the king, queen, and family rules, but not for the welfare of the people, but for own welfare, right? On the on basis of his discretion, right? On the उसमें नहीं मिलेगा, उस वो नहीं है. On the basis of their own yes, on अपने मर्जी से रूल करना. Absolute Raja, yes, you can say it's absolute. That's called tyranny. So tyranny is पहले थोड़ा monarchy में और लिख लीजिए. Refers to system of government in which king rules, for the welfare of the people. Right? They rule according to tradition. They rule according to tradition. Norms, values, right? And so on. A tyrannical king does not do that. Tyranny is just opposite of monarchy. It is also ruled by one person, either queen or king. But in tyranny, they don't care about the people. There are many tyrannical. Have you heard about Louis XIV of France? वो कहता था मैं गॉड हूं, आई एम अ गॉड. राइट? नहीं सुना है लुइस 14? और इंडिया में तुगलक नाम सुना है तुगलक का? यस सर. तुगलकाबाद जगह है. फिरोज शाह तुगलक एक राजा हुआ करते थे. उन्होंने एक दिन में यहां से दिल्ली की राजधानी ले गए अहमदाबाद, और दूसरे दिन बोला नहीं ये सही नहीं है, उधर से उठा के इधर ले आया. उसको कल कुछ आइडिया है कि चलो यहां से राजधानी हटा करके हम ले चलते गुजरात, और सेकेंड डे उसको लगा कि नहीं गुजरात भी सही नहीं है. सबको बोला सब एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए. दिल्ली में जब वो when he was directing to the people of Delhi, right, to administration, and said not a single people should left in Delhi. Tell everyone to go to the Ahmedabad. Next day, when the people everyone reached to there. Next day, he said, no, Ahmedabad is not good. Return back to Delhi. Not a single person should stay here. So, वो जो तुगलकी फरमान भी बोलते हैं, have you heard about the word तुगलकी फरमान? तुगलकी फरमान का मतलब होता है, कि जो मर्जी आया वो कह दिया. 8 बजे टीवी पे आया और बोला भाइयों बहनों कल से 500 और 1000 का नोट बंद, तो बंद. Without deliberation in people, without deliberation, a healthy deliberation. There is a Supreme Court judgment on demonetization. पढ़ा उसको देखा, the Supreme Court said it is a valid because government has pursued the process, but they had not debated. एक ही दिन पहले गवर्नर नहीं गवर्नमेंट ने गवर्नर को बोला कि ऐसा करे कि हम लोग नोटबंदी कर दे तो चलेगा, आप संभाल लोगे? उसने बोला हम संभाल लेंगे. नोटबंदी हो गई. It was not a suggestion of the RBI. It was a suggestion of the Ramdev Baba. Literally telling you,
वो जो शो था जिसमें रामदेव बाबा पहले क्या करते थे पता है, एक्सरसाइज करवाते थे, राइट, यू नो दैट इज कॉल्ड योगा, राइट, एंड ही यूज्ड टू गिव सो मच भाषण, सो मच ऑफ कि कैसे देश उन्नति करेगा, देश का संपत्ति कितना है, कैसे करप्शन है, you know, in his calculation petrol should be sold in 35 rupees, not in 70 rupees during the UPA government. He was so much critique of the UPA government, right? धरना वरना पे भी बैठ गए थे रामलीला मैदान में. Anyway, now got the idea of monarchy. What is tyranny? Tyranny, a system of government, in which person rules, you know, not on the basis of a set of norms, but on the basis of his or her discretion. डिस्क्रिशन मतलब समझ में आता है, जो मर्जी हुआ वही करेंगे. हाँ, एक राजा थे, आप लोग हिंदी समझते हैं सब लोग, राइट? रोहिणी, आयुषी, आशुतोष, यू ऑल अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? या, वेरी गुड. नो, एक राजा था कि राजा ने बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है. नहीं सुना है? राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है. यानी राजा जो कह दिया वही सब लोग बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड टायरनी. दैट इज कॉल्ड टायरनी. मंत्री ने कह दिया तेरा बेटा जिएगा तो जी सरकार जिएगा, तेरा बेटा मरेगा जी सरकार मर जाएगा. That is called tyranny. There are many examples of tyranny, right? Anyway, got the idea, tyranny? Now come to the idea of republic. What is republic? How we can define republic? Head of the state? Directly elected by the people. A system of government in which the head of the state is elected by the people. Right? Now, if you look at India is a republic, right? India is a republic. What about UK? Is UK a republic? Can we call the UK as a republic democratic? India is a republic democratic, right? But UK is monarchic democracy. Yes, there is a king and there is a parliament, but parliament is more powerful. There is a king and the parliament in the UK. In India, you can find no king, but elected head of the state, the president. President and the parliament. There is a called crown, right? वहां पर crown term देते हैं. Otherwise, there is a king now. Queen Elizabeth अभी मरी है. MDH वाला बूढ़ा मरा कि नहीं मरा अभी तक? बहुत सारे आते थे मीन ना. हाँ हाँ, राइट. सो वो MDH वाला बूढ़ा को देखा है? MDH वाला जो आता है एडवर्टाइजमेंट में, वो भी बहुत बुरा है.
France. France is a republic. France is a republic because president is an elected. Right? Macron, yeah, Macron नाम ही ना? Emmanuel Macron is the elected one. And वहाँ पे parliament में वहाँ पे कौन? Macron. आया था. हाँ. You have seen him. Very good, very good. तो कुछ बोला उनसे महाराज कुछ लगाओ हमारा कुछ जुगाड़. Indians are very जुगाड़ू ना. And let me tell you, there's nothing bad in being जुगाड़ू. जुगाड़ू ही काम करता है. बनारस में देखे थे. अच्छा कोई बात नहीं. अच्छा रिपब्लिक का मतलब पता चला. अच्छा let me tell you the origin of republic. Republic, yeah. But if I take the example from the history, then there were Mahajanpada in India. Lichvi, yeah. So 16 Mahajanpada, within which Lichvi was a Ganrajya. Lichvi, have you heard about Lichvi? Lichvi Republic. Not all Mahajanpada was a republic, but Lichvi was a republic in ancient India. If we talk about the idea of republic in the West, then it developed in Italy, today's Italy. Republic का जो idea है, otherwise there was an idea of monarchy. Republic means a person can become head of the state. Any person can become head of the state. That is idea. लिच्छवी नहीं बिहार में है. वैशाली जिसकी राजधानी थी, मुजफ्फरपुर आज का. ठीक है. Yeah, got the idea? Republic. Fine. Now let me tell you. Have you heard about democracy? नहीं सुना? Democracy. A system of government where military rules. Myanmar is example of democracy. Right? क्योंकि इसका यूज होगा a system of government in which military rules. That is called democracy. कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं होता है. डेमोक्रेसी में होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ऑफ कोर्स दे वर्क द मिलिट्री रूल्स डायरेक्टली. दे डोंट नीड परमिशन ऑफ एनीवन. Musharraf, Musharraf, have you heard of it? He died recently. Parvez Musharraf. Yes, sir. Pakistan's dictator. But what was his birthplace? Where? India only. Delhi. Delhi, yes, you are right, I see. Daryaganj का लड़का था वो छोरा. There was this article in Indian Express regarding yes. When I didn't know that fact. If you look at the Muhammad Ali Jinnah, he was also Gujarat. Muhammad Ali Jinnah was from Gujarat. Yes, sir. If you look at the first Prime Minister of Pakistan, who was that? Muhammad Ali Jinnah, sir. No, Jinnah was he was president here. Yeah, he was a Prime Minister. Who was the Prime Minister? He was also from India. Musharraf was also from India. पता है आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? आडवाणी यहाँ के नहीं है. तो जो यहाँ से गए वहां पर लीडर बन गए, वहां से आए तो यहाँ लीडर बन गए बहुत लोग. Of course not all. Anyway, democracy means a system of government where military rules. For example, Myanmar. Today's example. Right? अगर हम ancient में करेंगे तो Sparta was ruled by, have you heard about Sparta? Sparta was a city-state in ancient Greek. Yes, sir. Sparta was a democracy. Right? Today, Myanmar is a democracy. Pakistan में बदलता रहता है. Military is so powerful, doesn't matter. Doesn't matter. If the government, I'm talking about government, man. I'm talking about government. If government is ruled by military, then it is called democracy. ठीक है? अच्छा,
प्लूटस सबने ज्वाइन किया। आपको पता है प्लूटस का क्या मतलब होता है? इसके नाम पे एक रूल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। Plutocracy. Yes, yes, you are right. You are right. Plutocracy. What does it mean? Are you see? I guess it has something to do with intellect. It has over related to something. Intellect. Intellect. No, no, no. Plutus was a, you know, God of evidence, god of rich, god of wealth. जैसे हमारे यहाँ कुबेर मानते हैं। अभी बट कुबेर, कुबेर खैनी नहीं, वो कुबेर खैनी में बिकता है। हाँ, और गुटखा बिकता है, कुबेर बिकता है। रास्ते पे देखो नहीं कि लगा रहता है पूरा छल्ला, देखा होगा। वो नहीं, कुबेर का मतलब क्या था? कुबेर गॉड था। यस यस, कुबेर को गॉड ऑफ वेल्थ बोलते। अच्छा, तो प्लूटस को ऐसे ही ग्रीक सिटी स्टेट में प्लूटस वाज अ गॉड ऑफ वेल्दी, राइट? प्लूटस वाज सन ऑफ जीसस, इज इट? Ashutosh, I've never studied like this. I've studied that Plutus was a god of rich in the ancient Greek city-state. So Plutus is a system of government in which rich rules. Now, for example, I should give you example. If you look at, you know, Indian Parliament, you know the number of crorepati in Indian Parliament? No, out of 10, 9 are crorepati. Out of 10 MPs in India, 9 are crorepati, as per the ADR report. Oh, ADR, Association for Democratic Reform report. Now, it is accused that Indian, government is becoming plutocracy. Indian democracy is becoming plutocracy. Now, look at the Indian Parliament, which is, inhabited by the rich crorepati, but look at the masses, which are poor. Look at the voter, they are poor. The parties are elite, and masses are, voter are poor. Look at recently, Indian government has declared ration, free ration for 1 year. For how many people? 81 crore people. 81 crore people will get ration. बताओ, जिस देश में 81 crore people will get ration free, how much country's population is there? 140 crore मान लेते हैं, मोदी जी बोलते 130 crore भाई बहन, बोलते हैं ना 130 crore भाइयों बहनों, चलो हम 140 crore मान लेते। कितना परसेंट हुआ बताओ? मैथमेटिक्स में आप लोग ज्यादा तेज हो। अरे 50 तो बहुत, थोड़ा सा। How much percentage is that? Look at, the, parliamentarians, how they are rich. Look at the voter, how they are poor. And this divide is growing. Let me tell you, this divide is growing. If I talk about, World Inequality Report, World Inequality Report, 1% Indians occupies 29% of wealth. आपको पता है? And 10% Indians occupies 57% of wealth, around 60% of wealth. That means 90% of the population have access to 40% of wealth. But even that average is very, very, not average is बहुत dangerous होता है. Average picture. मैं बोलूँ कि average income है
10,000 रुपए है या 25,000 रुपए है। अगर आप एवरेज इनकम निकालेंगे इंडिया का, व्हाट इज एवरेज इनकम पर पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? 24 what? 1000? What is per capita income in India? Per month. Per month? Any idea? कभी देखिए, थोड़ा सा गूगल लगाइए और गूगल बाबा को देखिए कि गूगल बाबा बताओ। ऑक्सफैम रिपोर्ट, यस यस, ऑक्सफैम रिपोर्ट आता है पॉवर्टी के ऊपर, यस। 1% जो richest man है ना, वो 60% ऑफ वेल्थ को 1% richest। नहीं, वो ज्यादा हो जा रहा है। 50 to 60% ऑक्सफैम रिपोर्ट 1% Indians control 60% of wealth. 150,000 rupees. 150,000 rupees per 150,000 rupees. 150,000 rupees per month per capita. Yes, sir. You know 150,000 1.5 लाख बोल रहे हैं आप? Sir, what is the monthly per capita income of India? Na? Of Indians, not India. Indians। Anyway, my submission is here. Look at the Indian democracy, which has been accused often as it has become plutocracy. It means if you look at the Indian Parliament, which is inhabited or occupied by the wealthy, right? Got the idea? Plutocracy. Chalo, mujhe badhne do aage. Have you heard about oligarchy? Oligarchy Yes, is sir. aristocracy. Have you heard about aristocracy? What does it mean? कोई बाद में देख लेना। Sir, 5% of India, हाँ, 60%। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। Country weight control। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है 5% Indians controls 60% of country weight। India's wealth, right? But I talked about World Inequality Report. That is another organization. Yes, that is international. Oxfam is also international organization. It works on poverty, inequality. I have worked with Oxfam in 2011. Right, Oxfam and Action Aid. No, they work on poverty. Now, leave it. Fine. So it means if you look at the poverty in India, right? 50% bottom population controls 3% of it. That is very important. 50% of bottom people, 3% bottom people, controls 3% of wealth. That is a very important data. Look at the poverty. 50% population are much more poor. The poverty is there. All right? बट जब लाइन में होता है, जब नेता इलेक्शन का टाइम होता है, तो नेता इसके पास आते हैं या 1% के पास जाते हैं? मुझे बताओ। नेता 5% के पास नहीं जाते जो 60% वेल्थ कंट्रोल करता है इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग ऐसे यहां पर जाते हैं, राइट? पौवा भी बांटते, यू ऑल नो, राइट? वी शुड फ्रैंक टू टॉक। नहीं बांटते पौवा? पौवा मतलब दारू बांटते हैं ना भाई, पैसा बांटते हैं। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट? पौवा नहीं सुना है? ओहो, कितना मतलब बचपन में हो अभी तक। above 18 are you above 18 or not? तो सुना होगा आपने। हाँ, पौवा आधा नहीं सुना है? सुना है, देखो ये सुना है। Anyway, now if you look at election, leaders concentrate on it. If you look at democracy, I'll tell you why Plato, Aristotle did not like democracy. They rejected democracy as a form of government, a good form of government. We'll tell you. Anyway, chalo, what is aristocracy? This is simple things that we are talking about, basic things. Yeah, what is aristocracy? IUC? Sir, I'm not sure. Not sure? No problem. No. A system of government
in which best mind in which 1 minute few chosen best mind rules. Few chosen best mind, few meritorious chosen people rules. That is called aristocracy. मैंने बताता हूं क्या होता है कि जैसे किंग हुआ, राइट, तो मोनार्की भी होता है, और ये क्या करता है, कुछ लोगों को जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको चुनता है और बोलता है आप ये प्रोविंस यू गवर्न, दिस प्रोविंस यू गवर्न, दिस प्रोविंस यू गवर्न, दिस प्रोविंस यू गवर्न. No. According to merit. According to merit, then it is called aristocracy. Right? Few chosen people govern. According to merit, yeah. Few chosen best mind rules. So what is meritocracy then? Meritocracy is similar to aristocracy. If you see, meritocracy is a recent, idea that फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है, पॉपुलर हुआ है रिजर्वेशन, जब इंडिया में रिजर्वेशन लगा है उसके बाद, the reserved people doesn't have merit, right? Otherwise, if you look at meritocracy, where a system of government in which the meritorious, they claim themselves as superior and others as inferior, and they deserve that they are there to rule. They are born to rule. Are you getting my point? Rohini, Ayushi? Meritocracy is a system of government in which certain community, यहाँ पर community नहीं है, वहाँ पर family है, certain community thinks that they are born to rule, right? They are born to rule. यहां पर क्या होता है कि वो दूसरे कम्युनिटी को इंफीरियर समझते हैं. यहां पर कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है, right? But this is a very recent term. Otherwise, aristocracy is the term. Now let me tell you what is oligarchy. आशुतोष ने लिखा है, what is oligarchy? Rule by few. Rule by few. Yeah, few what? Few people. Wealthy people. Okay. A system of government in which few wealthy people govern. That is a oligarchy. ठीक है? बेसिक टर्म है ये, हम लोग यूज करेंगे. ये आशुतोष, गो अहेड. सर ओलिगार्की में तो एक मतलब एक लिनेज या एक वंश रूल करता है. हाँ, नहीं, ओलिगार्की में वो लिनेज भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई वेल्दी पीपल है, वो ट्रांसफर भी करता है ओलिगार्की. एरिस्टोक्रेसी भी ट्रांसफर होती है, राइट? एरिस्टोक्रेसी में भी लिनेज होता है, तो लिनेज दोनों जगह हो सकता है. Yeah. Sir, there was network issue. Can you please repeat aristocracy? Aristocracy means a system of government where few chosen people rules. That chosen people are best of mind. It's a meritocracy. Meritocracy.
अच्छा, Yes. meritocracy is a system of government where in a community thinks that they are born to rule. Merit lies in that community also only. Okay, sir. Right? And meritocracy has become so much popular after 1970s, 80s against the reservation, right? Anyway, in oligarchy, a system of government in which few wealthy people govern rules. समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, ठीक है. Astos, yes. Yes, sir. Is it transferable? It is transferable. हर चीज Yes. ट्रांसफरेबल होता है. डायनेस्टी तो हर जगह होती है. एरिस्टोक्रेसी में भी डायनेस्टी होती है, ओलिगार्की में भी डायनेस्टी होती है. लुक एट डॉक्टर्स. हाँ, जजेस का जो बच्चे सब जजेस बनने जा रहे हैं. नहीं. Yes, sir. Why collegium system is so much in controversy? तो ये जो प्रॉब्लम है ना ट्रांसफरेबिलिटी का, वो तो हर जगह है. हाँ, किशोर कुमार ने अपने बेटे को भी ट्रेन किया. You know किशोर कुमार sons, he was also good singer but not as किशोर कुमार was. अमित कुमार, नहीं सुना अमित कुमार? किसका? किशोर कुमार का. अमित कुमार का गाना सुने होंगे, बट एनीवे आपने माइंड Yes, किया. sir. यस आयुष सुना है. सुना है ना? यस. आपने The famous observe song नहीं बड़े अच्छे लगते हैं. नहीं, जिन बहुत sung by अच्छे, him. बहुत अच्छा. अमित कुमार was a good नहीं, singer. the song बड़े अच्छे लगते हैं. The famous song is बड़े sung by अच्छे him. लगते हैं. देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना. नहीं सुना है? अच्छा, कोई बात नहीं. गाने भी नहीं सुने आज तक. बहुत बढ़िया है. लाइफ में क्या किया फिर? सोया है बस. सुने? मुझे लगा कि सोया है बस. नहीं, सोना भी एक उपलब्धि है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओलिगार्की डन. या व्हाट इज टायरनी? टायरनी तो हो गया टोटलिटेरियन. व्हाट इज टोटलिटेरियन? What is, I mean, what is difference between tyranny and totalitarian? टायरनी भी है और टोटलिटेरियन भी है. दो वर्ड है. दोनों में क्या अंतर है? बेसिक डिफरेंस क्या है? जब आपने बोला एब्सोल्यूट रूल, दोनों एब्सोल्यूट रूल है. फाइन. पहले लिख लीजिए, इसका मतलब लिखिए. अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट when a person controls all sphere of life, like sphere of life, example given: social, political, cultural, right, and even personal, through a set of associates, then it is called totalitarian. देखिए टोटलिटेरियन का एग्जांपल. अपने नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है, नाम सुना है? क्या नाम है उसका? कौन नहीं जानता है उसको? हाँ, रॉन्ग कभी डोंग नहीं होता. वही था ना वो डायलॉग सुना है? ये डायलॉग जॉन बनेगा डॉन नहीं, वो तो हाँ वो यस यस यस, वो सही. उसका भी डायलॉग ऐसा ही है कार्टून पे. वो कौन सा? नहीं, अमरीश पुरी की एक मूवी थी. अमरीश पुरी का नाम सुने हो? अमरीश पुरी सुने हो? He was a great actor. हाँ,
दिल जले, वाह, मोकेम्बो खुश हुआ, मिस्टर इंडिया देखिए मूवी, इट वाज गुड मूवी, राइट, हाँ कैलेंडर, राइट, और मोकेम्बो खुश हुआ, और एक मूवी है उसकी जिसमें डायलॉग है, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। आई डोंट नो द मूवी नेम, बट कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में उसका वो पिक्चर आता है, पूरा अजीब सब उसका पिक्चर होता है उसमें। टोटलिटेरियन, यू नो, गवर्नमेंट, one person try to control all the affair, social, political, cultural, even personal. आप शादी किससे करोगे वो भी कंट्रोल करता है, like North Korean leader, like Hitler was a totalitarian. उसमें दूसरा लीडर ही नहीं होता, एक ही लीडर होता है, वो सुप्रीम होता है, मोकाम्बो टाइप। तहलका मूवी, ये आशुतोष, तहलका मूवी थी, नहीं सुना है? तहलका मूवी का नाम नहीं सुना है? सुना है? मेरी छतरी के नीचे आजा, गाना सुना है? इसी मूवी में है ना आशुतोष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो his character was a totalitarian character. In Mr. India, that character was a totalitarian character. Yes, Kim Jong, बताइए। तो है, वो है ही, वो टोटलिटेरियन लोग पगला होता है। सर वहाँ पर नियम बस कुछ नहीं है सर वहाँ पे। नियम क्या है? जो महाराज की इच्छा होगी, महाराज धीराज की, वही होगी, वही रूल है। उन्होंने बोला कि 1 week you don't have to laugh, you don't have to laugh. Yes, Ayushi, go ahead. Sir, dictatorship is same as totalitarianism? Dictatorship, you're right, dictatorship, somehow it is, but in dictatorship is a loose term. In dictatorship, you know, the rulers use their own decrees, and you can say similar, right? They govern on their own way, but personal life में मुझे नहीं लगता है, totalitarian is more crude. Totalitarians are more crude, and we often, you know, synonymously use dictator. For example, for Hitler, we use, he was a dictator, right? So synonymously we can use. Tyrannical use नहीं, tyranny use नहीं होता है। टायरनी मतलब लोगों को शादी वादी करने दिया जाता है, जो बिजनेस जो भी करना करो, बट अपने हिसाब से वो काम करता है। नहीं, that is China cannot be called totalitarian. Have you heard about authoritarian? Have you heard authoritarian government? Authoritarian. Authoritarian government is a system of government where the authority dictates everything, right? कि कैसा समाज होगा, कैसा टेम्पल हो, रिलीजन होगा, कैसा सब कुछ होगा, और person has to obey, and they are not going to intervene in the personal life, right? China is a classical example of authoritarian government. टायरनी का एग्जाम्पल प्रेजेंट में as such है नहीं, right? टायरनी में आप किम जोंग को ही कह सकते हैं, you can say, if you can pick from the contemporary world, then you can see Saudi is not, Saudi is a monarchic country. It is a monarchical country. They value tradition, they value, you know, Islam, they value, you know, the Islamic law. तो कैसे टायरनी हो जाएगा वो? Iran is an authoritarian government, where the government, you know, says that what I am saying, that is right. That is authoritarian government, right? This government may be elected government. For example, the current government in India, often termed by scholars as an authoritarian government. And Indian democracy has been termed as an ethnic democracy. सुना है word? Ethnic democracy. Right? A democracy which is run by Hindu. We call Hindu Rashtra, Hindu this, Hindu that, Hindu that. And we are ignoring the other community. That's why it's called ethnic democracy. Indian democracy is termed as an ethnic democracy.
कल या परसों न्यूज़पेपर में आया था, हिंदू अगर पढ़े होगे, मलेशियन और फिलीपींस डेमोक्रेसी के बारे में. हाउ फिलीपींस डेमोक्रेसी इज अ एथनिक डेमोक्रेसी. अच्छा, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कुछ? क्या पढ़ते हैं? मंथली मैगजीन? Yes, sir. नहीं. Yes, which newspaper do you read? The Indian Express. Indian Express. Indian Express opinion page you must go. Opinion page is good one. Yes, sir. Right? हाँ, द हिंदू पूरा पढ़िए भाई. 2 घंटे तो 2 घंटे 2 आवर्स जरूर पढ़िए. 2 घंटे पढ़िए भाई. नहीं हो पाएगा कल. 1 घंटे में नहीं खत्म कर पाओगे. तो यही बस. डोंट रीड सेलेक्टिव वन. एंड देन इंडियन एक्सप्रेस, यू नो, आई को ओपिनियन पेज. ओपिनियन पेज को जरूर पढ़िए. ठीक है? ओपिनियन पेज पता है ना, बहुत सारे लोग लिखते हैं Yes, उसमें. sir. या इट्स अ गुड वन. राइट? इफ यू कैन रीड फ्रंटलाइन, जरूरत नहीं है. फ्रंटलाइन अगर पढ़े, सिंस यू आर रीडिंग पॉलिटिकल साइंस, फ्रंटलाइन इफ यू कैन बाय एंड रीड. फ्रंटलाइन 15 दिन में एक बार आता है. नहीं सुना है फ्रंटलाइन का नाम? फ्रंटलाइन हिंदू ग्रुप का ही मैगजीन है ये. इट इज अ गुड मैगजीन. राइट? ईपीडब्ल्यू हमारे ऊपर छोड़ दीजिए. दैट वी विल स्टडी एंड विल टेल यू, डोंट वरी. बट ये 3 चीज तो जरूर पढ़ना चाहिए. योजना पढ़ना चाहिए. कुछ नहीं है, 1 दिन का योजना लोगे तो मतलब 1 महीने का तो 1 दिन में खत्म कर जाओगे योजना में. एक थीम होता है योजना में, कभी हेल्थ के ऊपर, कभी रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, समटाइम्स ऑन एजुकेशन, समटाइम्स ऑन पंचायती राज, समटाइम्स ऑन फेडरल गवर्नमेंट. हाँ, कभी रूरल डेवलपमेंट. खत्म कर जाना है. ठीक है? बी फेरासियस रीडर. read a lot. Right? अच्छा, let me tell you the few more terms. Yeah, totalitarian clear है? A totalitarian government controls all the life, all the sphere of individual life. Right? Social, political, economic, individual life, they controls to their associates. Right? That is a totalitarian. Hitler is an example. Right? This man, Kim Jong, is an example of totalitarian. Okay? So these are the basic. Which one, bacha? Anything that you want to ask? Yes, Ashutosh. Sir, please briefly describe the totalitarian, tyranny, and dictatorship. Totalitarian, tyranny and dictatorship. Tyranny and dictator. Yes, sir. Let me tell you, all 3 are used synonymously. You can use, but there is a very much thin difference. Very much thin difference. If you look at tyranny, tyranny is a rule by one person. Not, as according to their decrees, according to his, discretion. जैसे मन हुआ वैसे करेंगे हम. That is called tyranny. Right? They may come and say that, okay, this policy is implemented. Okay, that policy is implemented. Totalitarian is also, a rule by one person. Rule by one person. Right? To control. Here, purpose is to control all sphere of life. All spheres of life, including individual life. डिस्क्रिशन मतलब होता है लिखे क्यों, डिफाइन किया मैंने. टायरनी का क्या मतलब हो सकता है सिंपल वर्ड में.
राइट यहाँ पर डिफाइन किया कि रूल बाय, इवन टोटलिटेरियन होता है रूल बाय 1%, राइट. नाउ इफ यू लुक एट टोटलिटेरियन may have a set of associate to rule. इवन टायरनी भी अपना मंत्री संतरी होता है, राइट. नाउ कम टू द डिक्टेटर. डिक्टेटर इज ऑल्सो रूल बाय 1%. 1%, right? And you can say here purpose is to govern the country, right? So dictatorship is more similar to the tyranny. Otherwise we can use all three words synonymously. ठीक है? All three are ruled by the one person. Astos, clear? सर टायरनी में जो आपने बताया इसमें कंट्रोल ऑन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, सर ऐसा नहीं होता है? नहीं, टोटलिटेरियन में ऑल स्फीयर लाइफ का ये होता है. Is it not in tyranny and dictatorship? Tyranny में objective is not to govern the individual life. Tyranny, the purpose is to govern as per their own discretion, on decree. Don't follow the tradition, norms, value, constitution, and so on and so forth. सर फिर नाजिज्म किसमें आएगा? Nazism is basically इसमें रखते हैं Nazism को. Totalitarian is a 20th century phenomena. Let me tell you. एक चीज और बता देता हूँ. Right, totalitarian is in 20th century phenomena. Right. For example, if I give you Nazism and fascism is a totalitarian. What about that person? क्या नाम था उसका? लेनिन के बाद जो यूएसएसआर को संभाला था, स्टालिन. Stalin falls under this category. Astos. Right? We will study Hannah Arendt. She talked about totalitarian. Hannah Arendt wrote about totalitarian. Right? A totalitarian leader have always mass support. A totalitarian leaders have always mass support. Hitler had a lot of mass support. Tyrannical government, tyrannical person, those who are tyrannical and dictator may not have mass support. But totalitarian, leader have mass support. Stalin had mass support. Right? Stalin, Hitler को बोलते तो फ्यूरर सुना है? हिटलर ऐसे हाथ करता तो सब लोग ऐसे हाथ करते थे. नहीं सुना है? कभी हिटलर को नहीं देखा पिक्चर में, किसी मूवी में? हिटलर पे बहुत सारी सीरीज भी आ गई है. Right? So totalitarian is a modern phenomena of 20th century, right? Where the totalitarianist emerged from the mass support because we believed in masses. 20th century is a century of masses, mob. It is a mob supported rule, totalitarian, Astos. But tyranny is not. Tyranny is an old form of government run by one person. In tyranny, the leader has no mass support. Right? Tyranny, if you see the monarchy, tyranny is just opposite of monarchy. Monarchy is a good form of government run by one person. Tyranny is a bad form of government run by the one person. Astos, did you get the idea? Yes, sir. Okay. Dictatorship sir, लेकिन use. बोलो. या. सर नाजी और स्टालिन के बारे में कहीं कहीं तो टायरनी में भी लिखा होता है. मैंने क्या कहा? मैंने पहले ये बोला. मेरा पहला सेंटेंस था कि often we can use these all three words synonymously. Right? But you told me, sir, differentiate all three, like go a little deep. Then I went in little deep.
ओके सर। ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज synonymously all three, but there is a difference between tyranny and totalitarian. tyranny में मास सपोर्ट नहीं होगा लीडर के पास, और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी होगा। tyranny is just opposite of monarchy. monarchy में मास सपोर्ट नहीं होता, monarchy में सिटीजन को पता नहीं होता है, माए बाप करते रहते हैं। whether डेमोक्रेसी में भी माए बाप करते हैं नहीं, लीडर आता है तो नहीं बोलते हैं माए वो जाकर के लगते ऐसे प्रणाम कर दे, ऐसे लग रहा है उनका फूफा जी घर पे आए। हाँ, कोई नेता आ गया तो कैसे लोग जाते प्रणाम करने, नहीं जाते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता तो नेताजी आते प्रणाम करने, मुझे वोट दे दीजिएगा। हाँ, तो लोग चौड़ा होकर उस पर चढ़ जाते हैं। What happened before the election? Have you seen before election? Election is a very, very grand phenomena in India. Observe it. होता क्या है, नेता का जो बिहेवियर है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कैसे चेंज हो जाता है। नहीं, इलेक्शन से पहले बाबू भैया और इलेक्शन के बाद नहीं। हाँ, बग जाए यहां से। एनीवे, चलो, should I move then? Got the idea? All the third. Yes, sir. So we talked about form of government, और आज मुझे बात करना था थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बारे में। Now basics I have already told you. जो बेसिक्स आपको पढ़ने के लिए जरूरत था, ये सारे वर्ड यूज होंगे, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में। ऐसे ही बीच बीच में मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा, ताकि वो वर्ड यूज होंगे उसमें। जैसे अभी मैं मॉडर्निटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, नेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट जब ये वर्ड यूज करूंगा उससे पहले ये वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे वर्ड एग्जाम अभी होंगे यूज। Got the idea? Now come to the, now we will talk about 10th topic, which is WPT, Western Political Thought. In WPT, we talked about Greek trio. In Greek trio, we will talk about Socrates, Plato, and Aristotle. Right? We will start with this. And after finishing this, I'll come to the Machiavelli. Directly हम लोग Machiavelli पे आ जाएंगे. Right? And after Machiavelli, we'll talk about social contractualist. Social contractualist, there was 3 philosophers here: Hobbes, Locke, and रूसो। ठीक है, इसके बाद जेस मिल पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग मार्क्स पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रामसी पढ़ेंगे, उसके बाद हन्ना अरेंट पढ़ेंगे। Got the idea? Now let me talk about Greek city-state. Now if you look at, we are talking about Western political thought. दिमाग Western पे जरूर दे रहा। I taught you the word Western. What does it mean? Now if you look at, in Western society, philosophy took birth in Greek city-state. राइट? इन आज का जो ग्रीस है, कभी देखा है पिक्चर में, मैप पे? इसमें बहुत सारे आइलैंड है, छोटा 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 छोटा, राइट? और फिर एक बड़ा सा लैंड भी है, एक दो, है ना? इफ यू लुक ग्रीक सिटी स्टेट, देयर वाज अ सेवरल स्टेट. देयर वाज अ एथेंस, देयर वाज स्पार्टा, देयर वाज अ मिलिटस, there was Ionia. आपकी मर्जी है, लिख लो, आप कुछ ना लिखो, आप सारा लिख लो, ठीक है? मेरा काम है पढ़ाना आपको। पढ़ना कैसे पढ़ना
थोड़ा थोड़ा मैं सजेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे कैसे प्रिपेयर करके जाना है क्लासरूम, जब क्लासरूम जाना है तो किस तरह से जाना है। हाँ, नहीं तो आप सो के उठ के आराम से आ सकते हो, और गए फिर उसको तकिए पे रखा फिर से सो जा सकते हो। हाँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से थोड़ा सा क्लास में फर्क पड़ सकता है, बट अंदर आपके अंदर से आना चाहिए वो चीज कि आपको क्या लिखना है, क्या स्टडी करना है, कितने देर स्टडी करना है। गार्जियन भी आपके पीछे नहीं पड़ सकते, आप इतने बड़े हो गए हो, राइट राइट। सो ये सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, उसके नीचे 3 थिंकर है, हॉब्स, लॉक, रूसो। रूसो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उनके बिना हम काम नहीं कर सकते, बहुत जगह यूज होता है रूसो। जेएस मिल 50 साल तक शादी नहीं की थी इसने, पता है, क्योंकि ये शादीशुदा से प्रेम करता था। 51 साल का जब था तब उसकी जो वो प्रेमिका थी उसके हस्बैंड मरे, तब वो शादी किया, ठीक है। और वो उससे बड़ी थी, 9 साल बड़ी थी। कौन? हैरियट टेलर मिल। जब हैरियट टेलर 9 साल बड़ी थी, कुछ साल बाद 6-7 साल बाद हैरियट टेलर मर गई, शादी के जस्ट 6-7 साल बाद। और So they have wrote a book together, right? Sorry? They have wrote a book together, right? Yeah, J.S. Mill and his wife. Yes, you're right. Yeah, you're right. You see, they wrote book together, not together, but you know, since see, Harriet Taylor and J.S. Mill, जब आप दो लोग होते हो ना, तो see, this man was very intelligent. दोनों ने आर्ग्यूमेंट किया, लिखा किताब J.S. Mill ने, IUC on liberty, but in introduction J.S. Mill wrote that कि this book is as much as mine as much as Harriet Taylor's. इन्होंने रिकॉग्नाइज दिया हैरियट टेलर को कि ये किताब मेरे द्वारा उतना ही लिखा गया है जितना हैरियट टेलर के द्वारा, राइट। इंटरेस्टिंग चीज अब है कि जब हैरियट मरी और जहां पे दफनाया गया, उस साल में 6 महीना हैरियट जेएस मिल वहीं पे बैठा करता था, उसी बगल में। और जब जेएस मिल मर गया तो हैरियट टेलर का जो ये था ना, जहां पे अपनाते हैं, दफनाते, क्या बोलते उसको, कब्र, उसको हटा करके, ग्रेव कॉफिन, या कॉफिन, उसको हटा करके हैरियट को उसी में दबा दिया गया और फिर ढक दिया गया। एक साथ है। तो हाँ, अच्छी बात है, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, राइट। राइट। जेएस मिल वाज एक्सेलेंट। अगर इसकी आप राइटिंग देखोगे, बहुत अच्छी राइटिंग है, इसकी कहानी भी उतनी ही सुंदर है, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रेम कहानी, राइट। एनीवे, चलो, पता चल गया जेएस मिल के बारे में। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ग्रीक सिटी स्टेट। देखो, छेड़ दोगे तो फिर बातें जब, हाँ, कहते नहीं कि जब बातें जाती है तो दूर तक जाती है। एक सॉन्ग भी है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, सुना है क्या? क्या? एनीवे, so now try to understand Greek city state. Now if you see Greek cities, there was more than 100 states, more than 100 city states, and these states was very small, tiny state, right, in which 2 states was very famous. For me there were 3 or 4, but for you 2 states were very famous, Athens and Sparta. Athens and Sparta. Why Athens and Sparta was very famous? Because Athens was ruled by
Yes, Ayushi? So the Peloponnesian War by Thucydides. It Yeah, talks yeah. about Athens and Sparta, right? We'll talk about later. We will talk about later. Peloponnesian Mm-hmm. War, we'll talk about. Just give me one few things why there was a Peloponnesian War. Why war took place between these two states. Now, if you look at Athens was a democratic state. Athens was democracy, and I say direct democracy. Right? Athens was a center of culture. It was center of culture. It was center of economy. Right? And look at this, Athens attracted lot of people. Lot of people. जैसे आज अमेरिका है, लोग चाहते हैं ना अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिल जाए, पढ़ाने को मिल जाए. नहीं सोचते हैं अमेरिका में, यूएस में, यूयू में, यूरोपियन यूनियन में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? उसी टाइम पे एक ऐसा एथेंस था जहां पर लोग पढ़ाना भी चाहते थे, लोग जाकर के पढ़ना भी चाहते थे. कल्चर, इकोनॉमी, राइट? It was a center of culture, economy, right? And this Athens attracted many foreigners, right? Many foreigners. And those foreigners who used to go there to teach, they are called sophists. आपको बताया सोफिस्ट वर्ड सोफिया से आया है. सोफिया मतलब विजडम. या जब तक वर्ड का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक स्टोरी पता नहीं चलेगी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है डब्ल्यूपीटी में, बहुत इंटरेस्टिंग. ठीक है? और अगर आपका डब्ल्यूपीटी क्लियर है तो आधा पॉलिटिकल साइंस क्लियर है. कुछ नहीं करना उसके बाद प्लेटो पढ़ाते, प्लेटो बन जाना है, लिख देना है. ठीक है? कभी एरिस्टोटल बन जाना है, कभी मार्क्स बन जाना है, सब पूछेगा. हाँ, यहां पर कौन था? सोफिस्ट वाज ए टीचर. मैंने आपको कहा कि they were used up. There were many scholars who went there and they used to teach. Sophist were a half university. पहले तो यूनिवर्सिटी नाम की चीज नहीं थी ना. टीचर गुरुकुल हुआ करता था. इंडिया में भी गुरुकुल हुआ करता था, गुरुजी लोग पढ़ाते थे. यहां पर भी सोफिस्ट थे. अब इनका अलग अलग नाम था, बट जैसे यहां पर गुरुजी है, हम कहते हैं ना गुरुजी, जो भी मिले सबको गुरुजी. यहां पर भी एक वर्ड था जिसका नाम था सोफिस्ट. Sophist was very much meritorious. They were a scholar. They were like half university. They used to train, Athenian youth in history, in culture, in economy, in politics, in art, in music, and not what not. The Sophist used to teach the Athenian youth, right? History, economics, culture, art, music, right? Wrestling, how to win election, and so on and so forth. Let me tell you, this Athens was very much famous during the one king. His name was Pericles. This Athens was on at heyday, on at climax, on at its zenith during the Pericles. Pericles patronized democratic institutions. Even military general was elected in democracy, elected by the people. Administrator, politicians, military, judges, all were elected in Athens. And it was self-ruled. Now, if you look at, this is the political scenario. If you look at the economy, the economy was agrarian, primarily agrarian. If I talk about the economy, Athenian economy was primarily agrarian. समझ में आ रहा है? उस समय क्या इंडस्ट्री थोड़ी आई थी? It was agrarian society, right? If I talk about politics, it was a democratic city-state.
right? If I talk about culture, it was it was a debatable open culture where rational debate was allowed, right? Where reasoned debate was allowed. Athens was a center of culture, center of art, center of learning, which attracted many, from the other part of the world, right? And those all scholar who was there, but outsider they were called sophist. Sophist was outsider, but otherwise those other foreigner they were called metics. They were called metics. Metics were foreigner. Foreigner word hai English. Metics is a Greek word. Now come to the Sparta. Sparta was ruled by democracy. Sparta was ruled by democracy. एक चीज और बता देता हूं. Athens army was very powerful. Navy was very powerful. Right? Athens navy was powerful, but its army was also powerful. But if I talk about Sparta, here you can see army was very powerful. Right? It was a time. Outsider was not allowed in Sparta. Like Myanmar में अगर जाओ आप नहीं जाने देगा. Right? बड़ा ही जांच पड़ताल करता है democracy, military rule. Sparta was ruled by, let me tell you what is the beauty of Sparta. Man and woman both were fighters in Sparta. But in Athens, men were citizens and they were only fighters. Women were not allowed either in military or in political affair of the state. Athens, yeah, men and women both were fighters. They were equally entitled to be an army personnel. Only few men, yeah. Few men were citizens, yeah. सिटीजन का मतलब नागरिक नहीं था, ये नहीं था, इनहैबिटेंट नहीं था. Citizens were only those persons who were allowed to participate in collective affair of the state. Those who used to participate in collective affair of the state, citizenship was assigned to them only. Citizenship was a status in Athens. Not all inhabitants were citizens. Women were excluded. Sophists were not citizen. Metics were not citizen. Foreigner were not citizen. यहाँ पर slave भी था. दास का नाम सुने हो? Slave was also one category in Athens. They were not citizen. There were the prisoners. Prisoners were not citizen. So citizen was an exclusive category, status in Athens. Getting the idea? Now let me introduce you the Sparta. अच्छा, Athens के साथ clear है? रोहिणी, आयुषी, आशुतोष. What was Athens? Yes, sir. लिखिए ना Yes, story. sir. Yes, sir. लिखिए. ये सारा जो छोटा छोटा पॉइंट लिखा है ना, लिखिए. देखो, ये सब की वर्ड है, मैं बता रहा हूँ. स्टोरी तो आप नहीं लिखना. वो ऊपर 3 वर्ड तो ठीक से लिखा सर एथेंस में, बाकी आप नीचे थोड़ा सा वो मिक्स करके बता दिए. क्या मिक्स करके बता दिया? वर्ड लिख दिए तो पता ही नहीं चला किसका क्या है. क्या कुछ पता नहीं चला? अच्छा, मैं बताता हूँ फिर से. वेट लेट मी फिर से. राइट, जिसके लिए जो समझ गए ठीक है, उसके लिए तो रिवीजन हो गया, जो नहीं समझे उसके लिए दोबारा. नाउ देयर आर मेनी ग्रीक सिटी स्टेट. देयर वाज मोर देन 100 ग्रीक सिटी स्टेट. राइट, small tiny state in ancient Greek. Right, and most of the famous of them were Athens, right, Sparta, Ionia, right, Miletus,
right? Here we need to talk about Athens and Sparta. These two Greek city-state was very famous. Why they were famous? If you look at Athens, if I divide Athens and Sparta, Athens, if I talk about the political structure, it was direct democracy. It was direct democracy. Got the idea? If you look at, direct democracy, it means, people govern themselves. Governed themselves. इसका तो यही मतलब हुआ ना, right? If you look at Pericles, is known as golden age. Is for Athens. For Athens. Pericles age, उनका जो time था Pericles era, is known as golden age for Athens. Why is it so? He patronized democratic institutions. He promoted democracy. He promoted democracy and democratic institutions. Right? All positions, right? Like military, administrative, political, were based on election. What the idea? Political structure, only few male were citizen. Only few male were citizens, right? और आगे ये पढ़ाएंगे इसके बारे में. मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. Only few males were citizens. What the idea? Citizenship idea पढ़ाऊंगा वहां पर क्या था. ठीक है, अभी तो मुझे जस्ट इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो ज्यादा नहीं. पॉलिटिकल समझ में आया? You have to go. You can ask those. It's all right. This was the political structure. Right? Now come to the economy. Right? Now come to the economy. Right? It was agrarian. It was primarily agrarian. Slave was part of economy. Was a part of economy. It means slave was sold and bought in Athens. It means slave was sold and bought in open market in Athens. ठीक है, ये इकोनॉमी था. स्लेव बड़ा पार्ट था इकोनॉमी का, स्लेव जो था. ओके रोहिणी, आर यू सी मेकिंग सेंस? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Now come to the culture. Right? The culture was open. Or there was a open culture of debate and discussion
discussion. You know, it was the first society. It was the first society which gave primacy to region. रीजन का पता है? रीजन किसको कहते हैं? राइट, लॉजिक. रीजन एंड लॉजिक, पता है ना? रीजन एंड लॉजिक क्यों पढ़ते हैं? आज भी रीजन एंड लॉजिक को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. Athenian society already invented and implemented the logic and reason. They tried to, they sought to cultivate reason and logic. आज भी हम नहीं करते फॉलो. करते हैं क्या? वही कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पूर्वज कर चुके होते हैं, हमारे फैमिली ने कर चुका होता है, या हमारा समाज कर रहा होता है ना? मंदिर के सामने गए तो ऐसे सर झुका दिया, ये करते हैं लोग. जहां मंदिर देखी वहां पर होता है. बट सवाल उठाता है सोक्रेटिस. Socrates was a person who questioned God. And for that reason, he was poisoned to death. मार दिया गया, और डेमोक्रेटिक तरीके से मारा. 500 जजों का भीड़ था. 500 जजों का भीड़ था जिसने सोक्रेटिस को प्रोसिक्यूट किया. पता है 500 जजों में से नंबर मैंने किताब में दिया हुआ है, लिखिएगा, देखिएगा कितना है. 327 फेवर में देना किताब. आपको कुछ कहना? 327 लोगों ने ये जजेस ने हाँ 280 voted out of 500. 280 voted for the prosecution, right? And 220 voted कि नहीं, आप छोड़ दो इनको. he is allowed to question the God. अगर आज 500 जज बैठेगा तो बोलेगा क्या 220 लोग he can question the God? Look at the, वहां पर जो मेजर प्रॉब्लम हो, आज हमारे जो जजमेंट है, इंडिया जजमेंट, मैक्सिमम बेंच कौन सा है? केशवानंद भारती केस 13 जजों का बेंच था. वहां पर जो जूरी बैठती थी 500 जजों का होता था. वो डिसाइड करते थे मेजर क्वेश्चन. अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती है, द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, or whether parliament can amend the constitution, fundamental right or not, they are done by the large benches. If you look at कौन सा मंडल केस, इंदिरा साहनी केस, 9 जजों का बेंच था. वहां पर 500 जजेज होते थे और वो डिसाइड करते थे. थिंक अबाउट हाउ दे वर डेवलप्ड, right? And that's why we're reading classical text, the Greek city state. Why it is important? Making sense? Okay. Right, if you look at culture, it was center of interaction. It was center of attraction. Right, which attracted many scholars from various parts of the world. These scholars were called sophists.
right? Got the idea? Now, if you talk about defense, right? Athens was expert in naval force. आपको पता है during World War I, which country was the superpower in naval force? कौन था during World War I? रोहिणी, आयुषी. Before World War II, which country was a naval power of the world? बताओ ना कुछ. नहीं भाई, रसिया की कौन सी औकात थी? जापान से हार गया था. नहीं भाई, UK was a naval power of the world. ब्रिटेन भाई. बिफोर वर्ल्ड वॉर वही तो पूछ रहा हूं मैं. बिफोर वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो यूएस बन गया नेवल पावर. अभी यूएस है भाई, नेवल पावर यूएस है. यूएस है, थे नहीं. यूएस को पीछे करने में अभी लग जाएंगे 50 साल. नेवल फोर्स में तो चाइना इंडिया को पीछे नहीं कर सकता, वो तो यूएस है. ठीक है. हाँ, वो कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा वहां ज्यादा पढ़िए ये सब के बारे में. नाउ इफ यू लुक एट, दे हैड गुड आर्मी. अच्छा, आर्मी में कौन सा स्ट्रॉन्गर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले? which country was powerful in army? गुड आर्मी मतलब they had good army. अच्छा, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या उससे पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, which country had the finest army in the world? Germany. Yes, Germany had the finest army in the world. France has the finest army in the world. Right? Anyway, इसीलिए जब ब्रिटेन आता है ना, आप देखोगे ब्रिटेन जब भी लड़ाई करता है तो उसको ले जाता है समुद्र के किनारे. आजा बेटा वहां देख लेंगे. नेवल पावर था भाई. समुद्र में एक जिसको तैरना आए वो क्या करेगा? चल बेटा समुद्र के किनारे, उसमें तुमको गोता लगवाते हैं. अदरवाइज उसको पता है कि जमीन पे मैं हार जाऊंगा. एनीवे, यू गॉट द आइडिया अबाउट एथेंस. ठीक है. Now let me go back to the Sparta. You know, Sparta was, if you talk about political, it was democracy. What do you mean by democracy? It was a military rule. And you know, and men and women are equal. Men and women were equal fighter. आज भी स्पार्टा के लोग मिलिट्री पावर में आज भी अगर नाम लेते तो स्पार्टा का नाम लेते हैं. Once upon a time, Sparta was a very, very powerful. If you talk about a political, right? It was a democracy. Men and women were equally powerful, right? क्या लिखा फिर मैंने? Economy. Economy was agrarian. Here again. Economy was agrarian. Right? एक चीज बता देता हूं. Sparta did not allow any foreigner to enter Sparta. Athens allowed जो आ सको आ जाओ. All are welcome. And that's why Athens was very prosperous. Athens was very prosperous because many scholars entered Athens and they enriched Athens through their knowledge. Now in Sparta, foreigners were not allowed to enter. Got the idea? Now, if you talk about और क्या डिफेंस के बाद इकोनॉमी, कल्चर में अगर बोलेंगे, they were very strict.
They were very disciplined. And they did not allowed any foreigner to enter Sparta. Now talk about defense. They were powerful in army. They had powerful army. ये बेसिक डिफरेंस है एथेंस और स्पार्टा में, समझ में आया? फिर भी एथेंस और स्पार्टा एथेंस से चिढ़ता था। एथेंस स्पार्टा से चिढ़ता था। कैसे रसिया इंडिया चाइना से चिढ़ता है और चाइना इंडिया से चिढ़ता है, या चाइना अमेरिका से चिढ़ता है ना? They are competitor. There is a two power center in Athenian city state, and this two power center was a neighboring country. Let me tell you, they were a neighboring country, right? और स्पार्टा और एथेंस में बड़ा चिढ़न हुआ करती थी, because Athens was prosperous. सारा किताब पढ़ना, 1, 2, 3 चैप्टर तक यही बात है, लिखा हुआ है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, लिखा हुआ वही है, समझिए चीजों को। ठीक है, इंफॉर्मेशन कीवर्ड लिखिए, स्टोरी अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, आंसर अपने हिसाब से, जितनी आपकी समझदारी है किताब पढ़ के और क्लास में समझ के, यू राइट आंसर। नाउ लुक एट एथेंस. Athens was prosperous. It attracted many scholars, right? And there was a praise of Athens. Athens का बहुत praise मिलता था. Now स्पार्टा को चिढ़न हो गई. स्पार्टा ताक में था कि कब इसको दबोचेंगे. When we will attack. Let me to Pericles died. After 2 years, Sparta attacked Athens. After 2 years of death of the Pericles, I told you that Pericles was a leader who promoted and patronized democracy and democratic institution in Athens. The Pericles age is known as golden age of democracy, for democracy in Athens. वो मरता है, ये इस पे अटैक करता है। और मैं बता दूं, केवल ये इस पे अटैक नहीं करता है, एथेंस ने अपना एलाइज बना लिया। बहुत सारी कंट्री थे जो एथेंस को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे कंट्री थे जिन्होंने स्पार्टा को सपोर्ट किया। बैलेंस ऑफ पावर पढ़े हो कभी लाइफ में? इन दोनों के पीछे दो पावर एक ग्रुप बन गया, एक स्पार्टा के द्वारा, एक लीड कर रहा था स्पार्टा, एक लीड कर रहा था एथेंस। जैसे कोल्ड वॉर, आपने कोल्ड वॉर सुना है ना? कोल्ड वॉर में कौन था? एक तरफ यूएस था, एक तरफ यूएसएसआर था। अब इसके बहुत सारे एलायंस थे, यूएस के भी बहुत सारे सपोर्टर थे ना? इसी तरह एथेंस के बहुत सारे कंट्री ने बहुत सारे सपोर्ट किया और स्पार्टा को बहुत सारे कंट्री ने सपोर्ट किया, और ये लड़ाई हुई थी एक जगह पे जिसका नाम था पेलोपोनेशिया। ये जगह का नाम था पेलोपोनेशिया। मैं बता दूं, 32 साल तक ये लड़ाई चली थी, 1-2 साल नहीं, 32 साल तक ये लड़ाई चली थी, राइट? 32 साल तक लड़ाई चली थी ये लड़ाई। और उस लड़ाई में जो सोक्रेटिस थे, जिसकी हम बात करेंगे, सोक्रेटिस क्या करते थे पता है? सोक्रेटिस एम्यूनिशन बनाया करते थे। एम्यूनिशन का पता है ना? व्हाट इज एम्यूनिशन? अभी के टर्म में गोला बारूद।
उस टाइम पे ये तलवार, चाकू, छुरी, तीर वगैरह बनाया करते थे सोक्रेटिस, राइट। और ये खुद सोल्जर थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी एथेंस की तरफ से, लेकिन लड़ाई में एक दुर्घटना हो गई, सोक्रेटिस ने लड़ाई छोड़ दी। आपको पता है, when you become not eligible, you are not become remain eligible to fight, then you are out from the military services. He was rejected from the military services. Now Socrates, started putting attention towards the domestic affair in Athens. Now what happens? He used to criticize government. It was a democratic government. He used to criticize government. He started criticizing sophists because, sophists at this time used to give education to the youth to win, how to win election easily. Now sophists, many youth were very attracted by the sophists, and Socrates was used to criticize sophists कि ये लोग corrupt कर रहा है. If Athens is declining, the main reason is sophist, because this sophist was training the Athenian youth, right, for corrupt practices to get elected, right, and how to use the public office for personal gain, right. Athens declined. Got the idea? Peloponnesian War? A Peloponnesian War took place. Now one more thing, one person who was also military from Athens, his name was Thucydides. Thucydides, if I'm right, my spelling is correct. तब देना, उसमें से स्पेलिंग देख लेता हूँ Thucydides का. हाँ 6 महीने में तो एक बार स्पेलिंग लिखते हैं इनका. Peloponnesian War. ये वर्ड तो सीखना पड़ेगा. नहीं, THUCY. अच्छा, CY है या CY, उसके बाद सही है. नहीं रखिए ना. अच्छा, लास्ट में दे देंगे कि मुझे जरूरत पड़ेगी. ठीक है. Thucydides was also military. He was also rejected from the military. Thank you, IUC. Military services, and he wrote a book. The Peloponnesian War. उस किताब का नाम क्या था? The Peloponnesian War. इस किताब का नाम था ये. उन्होंने किताब लिख डाली. He became the great historian. Got the idea? Now look at Socrates. Socrates was बहुत मजाक करते थे. Socrates दारू बहुत पीते थे, राइट, और मनमौजी थे. मनमौजी, मनमर्जी से, मनमर्जी से क्रिटिसाइज करते थे, खूब अवहेलना करते थे, और इतनी बेइज्जत कर देते थे कि एक बार लोगों ने इनका घर जला दिया. He used to criticize Athens. He used to criticize government. He used to criticize God. Right? Now, एक एमपी का दिमाग चकरा गया. उसका नाम था सिटी में, स्टेट में मिलेटस था. उस आदमी का नाम भी था मिलेटस. A person, Miletus, accused Socrates, right, that he is corrupting youth. He is not obeying the city god. He has created his own god, right? And he is corrupting the city Athenian youth. What happened? Socrates was prosecuted, and I told you that 500 judges, a jury of 500, out of 500, 220 था ना, and 280, right? 280 judges
thought that the Socrates is wrong. He has done crime. He had corrupted the youth, right? And he is guilty. 220 judges said that no, person has a right to criticize government and also, right to create his or her own God. His own God. हर तो छोड़ दीजिए, मोहन की कोई स्थिति नहीं थी एथेंस में, right? So he is not, accused. He is not guilty. But since decision was majority, डेमोक्रेसी में क्या होता है? मेजोरिटी का डिसीजन माना जाता है. लोगों ने कहा ठीक है, ये गिल्टी है. Socrates, you are guilty of corrupting the city-state youth. You are guilty of not obeying the God. He was laughing, Yes, I don't obey the God, but it is wrong that I am corrupting the youth. I'm not corrupting the youth. It is a sophist who's corrupting the youth, teaching youth in rhetoric. Rhetoric मतलब समझते हो? गाल बजाना. मोदी जी मतलब रेटोरिक करते हैं, भाइयों बहनों ये कर दूंगा, करूंगा कुछ नहीं. हाँ भाइयों बहनों 50 दिन में ऐसा दोनों हो जाएगा, होगा कुछ नहीं. हाँ 2022 तक सबको घर मिल जाएगी, 2023 आया कुछ नहीं. 2022 तक सबका इसका आमदनी दुगुना हो जाएगा, किसान का होगा कुछ नहीं. 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, होगा कुछ नहीं. ठीक है, 4 लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं. That is rhetoric. He said it is a sophist who is teaching rhetoric and eloquence, bhashanbaji. They are teaching the Athenian youth to how to win election, right? And this Athenian youth is using public office for private gain, right? And consequently, the morality and moral ethics is declined of Athens. Athens is declining, right? Athens lost war because of this, right? Let me tell you, the prosecution part demanded death for Socrates, right? आपको पता है जिस दिन गिल्टी ठहराया जाता है उस दिन डेथ नहीं दिया जाता, सेंटेंस बाद में दिया जाता है. स्टिल अभी तक ये माना जाता है. इस दिन पालिया गिल्टी है, 1 महीना रखा कि 1 month was kept to give sentence. He was sentenced to death by drinking hemlock. Hemlock? Hemlock is a kind of poison. Hemlock एक पेड़ होता था, उससे poison निकलता था. He was sentenced to death by, drinking hemlock. In 1 month, he met many people. एक इनका बहुत फॉलोअर था, एक का नाम था क्राइटो. क्राइटो ने पूरा इंतजाम कर लिया कि कैसे गुरुजी को भगाना है, कैसे. इनके बहुत सपोर्टर थे, सोक्रेटिस के बहुत सपोर्टर थे कि कैसे इनको भगाना है. जब ये जेल में थे, the Socrates, he said, no, I will not run away from the jail. I will face the sentence. If I'll run away from the jail, then I will, people will think that I was wrong. Since I'm not wrong, I'm right, I'll face the sentence. And he died after having hemlock. This entire process, this process influenced one person. His name was Plato. We know that Socrates wrote nothing. We don't have anything written by, any book written by or letter written by Socrates. The Plato was the most, advocator. All book. Plato wrote 33 books, around 33, 34 books.
And in the first, 10 or 20, not in 20 books, his main speaker is Socrates. इन्होंने जो किताब लिखा है, कैसे लिखा बताता हूं. आपने कोई ड्रामा देखा है? मूवी तो देखी होगी. अब मूवी में क्या होता है? डायलॉग होता है. यस, 4-5 लोग होते हैं और इसमें डायलॉग होता है, राइट. और डायलॉग में जो डायलॉग में सबसे ऊपर आ गया वो जीत जाता है. समझे? इसको बोलते हैं डायलेक्टिक फॉर्म, डायलेक्टिकल फॉर्म. इनका सारा जो राइटिंग है वो डायलेक्टिकल फॉर्म में है. और एक जो स्पीकर, मेन स्पीकर है, वो है सोक्रेटिस. इनके सारे राइटिंग एक्सेप्ट स्टेट्समैन एंड लॉ. लॉ में गुरुजी को उन्होंने नहीं रखा, अदरवाइज ऑल बुक. क्राइटो इज अ बुक. क्राइटो के नाम पे क्राइटो बुक किताब लिख दिया. So Plato wrote several books in which 3 books are very very important. One is the Republic. कुछ लिखना नहीं अभी, छोटा छोटा वर्ड. Republic, the Statesman. क्या हो रहा है? Statesman and the Law. He wrote. So the statesman we have to study and the law is not. Yes, are you see? Study statesman and the law. You said that these two aren't written in dialectical form. These are not dialectical form. Okay. Republic Right? is right. Republic is. Right? Otherwise, Crito, Phaedo, Meto, बहुत सारे बुक है. हमें 3 पढ़ना है. आज मैंने आपको क्या बताया? आपको थोड़ा सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ये वो जो भी है, और थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट बताया आपको कि वी नीड टू स्टडी ग्रीक सिटी से 3 फिलोसोफर. टू नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्लेटो, एंड थ्रू प्लेटो वी विल अंडरस्टैंड सोक्रेटिस. है ना? राइट? जैसे भगवान है, खुद भगवान नहीं हम जानते हैं, पर गीता कहता है भगवान वच. हैव यू हर्ड गीता? गीता इज अ एपिक. भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, तो ये माना जाता है कि गीता इज अ होली बुक. राइट? यस, बट प्लेटो रोट अ रिपब्लिक. इन दिस बुक, he talked about Socrates said this. Got the idea? So in the next class we will start Plato. आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस आपको ये बताया form of government and little bit I gave you the context of ancient Greek city state. Right? ठीक है? तो अब क्लास अब से शुरू होगी. अभी तो बेसिक्स बता रहा था मैं. यहां पर कोई दिक्कत हो, शुरू के जो चैप्टर हैं आप जरूर पढ़ें. शुरू के 2 चैप्टर 3 चैप्टर जरूर पढ़ें. 3 चैप्टर तक जरूर पढ़ें. ठीक है? एक पेज का चैप्टर है, ज्यादा नहीं है. जी बोलिए. So which book you are talking about? The class notes which we have got it. Sorry, are you see? I didn't get. So which book you are talking about? From which book we need to study the chapters? Look at this. Okay, yes, I do have. You have? Yeah, Rohini, Yes, do yes. you? Yes, sir, I have. Okay, so first 3 chapter you not need to go through. Right? एक पेज का चैप्टर है. अगर आप एक पेज का चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो फिर मैं तो बहुत बेइज्जत करता हूँ स्टूडेंट का. हाँ, वो बिना मानते नहीं है. अगर हम आपको चढ़ा देंगे तो आप मानेंगे नहीं. राइट? स्टडी इट, रीड इट, टेक इट द बुक. हाँ बोलिए, सवाल बोलिए. हाँ, रूल ऑफ लॉ था भाई. रूल ऑफ लॉ था. डेमोक्रेसी थी, मतलब क्या? लॉ वाज मेड बाय द पीपल ऑफ एथेंस एंड दैट लॉ वाज सुप्रीम.
People were not supreme. The law was supreme. Still, we find law should be supreme. What is the rule of law? लॉ के हिसाब से, हाँ, कौन? सोक्रेटिस को जो दिया गया, देखो लॉ में तो ये नहीं लिखा रहता है कि ये you know whether he is guilty or not. You know, it was defined, you know, if there was a jury of 500 and they decided whether they did crime or not. So that rule, that law was not so developed like IPC we have today. Indian Penal Code ऐसा नहीं था. तो उसने बोला तो गलत बोला कि नहीं, आर्टिकल 405 का उल्लंघन है कि नहीं, आईपीसी 405, 295 है, यू नो हेट स्पीच के कारण है ये, 153A, 153B, ये ऐसा नहीं था भाई, ऐसा कुछ लॉ इतना ज्यादा डेवलप नहीं था. ठीक है, तो इसमें से डिबेट हुआ और 280 लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये गिल्टी है, 220 लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये गिल्टी नहीं है. सिंस डिसीजन मेजोरिटी का था कि ये गिल्टी है, ज्यूरी ने कहा कि ये गिल्टी है. मतलब डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को माना जाता है. यस रोहिणी, आयुषी, राइट. सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ प्लेटो. ठीक है, इतना कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? 3 चैप्टर पढ़ लेंगे कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा लाइन बाय लाइन? कुछ बहुत आसान है, पढ़ लेना. तुम्हारे आप लोगों के सहयोग के बिना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ठीक से. अगर आप पढ़ के आएंगे, वर्ड कौन सा? थ्यूसिडिडीज याद कर लो नहीं यार. ब्यूरोक्रेसी कुछ वर्ड है टफ है. हाँ यार, कैसे हाउ विल बी अ स्पेशल पर्सन, राइट? देयर आर फ्यू वर्ड्स, सब वर्ड तो नहीं है ना, कुछ वर्ड है दैट आर लिटिल difficult. Why it is a little difficult? Because we don't write often. 50 बार लिख लो, अपने आप नहीं होगा, right? When I learned bureaucracy, the word, yes sir, ISC, go ahead. So we will be having classes twice in a week as of now. Sorry, I didn't get. We will be having classes twice in a week as of now. In a week, 1 or 2 more week, IUC. 1 or 2 more week. Okay. Okay, sir. ठीक है? Yeah. Then I'll take regularly, definitely. Right? I'll give you hand notes also. Don't worry. For each thinker. ठीक है? But इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना भी है. मैं लिखवाऊंगा. अगर मान लो कि मैं सोचूंगा कि मैं पढ़ा दूं और हैंड नोट्स दे दूं, समझा दूं अच्छे से, हम लोग डिस्कशन कर ले और हैंड नोट्स दे दूं, उसमें क्या दिक्कत है? बट टाइम लगेगा, बहुत टाइम ज्यादा लगेगा. मैं अच्छे से डिस्कस पढ़ा दूं, हम लोग आपस में डिस्कस कर ले. आप भी बोले 5 मिनट, ये भी बोले 5 मिनट, सब भी बोले, या आयुषी भी बोले 5 मिनट, रोहिणी, सब लोग जितने पार्टिसिपेंट है, मैं पूछूंगा अच्छा क्या समझा आपने, जो आपने समझा बताइए. राइट? ये जब तक आप पर्सनालिटी डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, कि आर्टिकुलेशन कैसे करना है, कैसे समझना है, कैसे एक्सप्लेन करना चीजों को, तब तक क्या करेंगे आप यूपीएससी में? कुछ भी आपको याद नहीं करा. इतना बड़ा सिलेबस है, आप रट नहीं सकते. राइट? आप चतुर नहीं कर सकते. चतुर जो है ना, तो रट लो, नहीं होगा रटा हुआ. लेट मी टेल यू, आपको कीवर्ड ध्यान में रखना है और स्टोरी, सारा चीज मैं स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा. स्टोरी समझना है, दादी की कहानी, और एग्जाम लिखना है, सिंपल. राइट? हाँ, मोर देन इनफ. कोई रेफरेंस बुक नहीं चाहिए. किताबें मुझे छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए. ठीक है, किताबें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए. both the paper for paper 2 you read newspaper, new things IR में. yes. but जो static part है, we are sufficient. मतलब no notes है आपके, कोई किताब पढ़नी. हाँ, yes रोहिणी. Sir, Socrates had left the war or he was rejected? He was rejected. Okay, sir. Both Socrates and Thucydides both rejected from the
Okay, sir. ठीक है? Socrates' work was to make the arms and ammunition for military. Fine. So see you tomorrow. I'll start Plato. Right. Read these first 3 chapters. See you. Fine. Okay. Let me tell you, whenever you miss the class, just see the Thank you recorded so class, so that in the next class you can connect. Huh.